Good morning, dear students. Welcome back in maths class. Dear students, today we are learn about types of angles. So let's get start. Your first angle is right angle. You can see the shape of right side. What is the shape? L shape, right? इस L shape को हम क्या कहेंगे? Right angle. A right angle is exactly 90 degree. अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो कौन सी शेप में आएगा? एल शेप में. सी इट्स एग्जाम्पल. लुक एट दिस चेयर एंड रिमेंबर द राइट एंगल इज शोन बाय अ स्पेशल सिंबल दैट इज अ स्क्वायर बिटवीन द टू आर्म्स. द नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल. नाउ व्हाट इज एक्यूट एंगल? An angle whose measure is between 0 degree and 90 degree is called an acute angle. And it is in a narrow shape. कौन सी शेप में होता है ये? नैरो शेप में. Look at this example and see next one. Look at this pizza. It is a acute angle. The next is obtuse angle. Now what is obtuse angle? An angle whose measure is between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle. Look at this example. It is more than 90 degree. The next second one, it is also more than 90 degree. जब आपका एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के मिड में आता है वो एंगल कौन सा है? obtuse angle. The next one more angle, straight angle. An angle that measure 180 degree is called a straight angle. वो एक straight line की see its example. That is a straight angle examples. That is clear, students? Now let's see types of angles. The first one is obtuse angle, the second one is acute, the third one is straight angle, and the fourth is right angle. That is clear, student? When the angle is more than 90 degree, that is obtuse. That is the next, the angle less than 90 degree, that is acute. And the straight angle 180 degree angle, and the last right angle which is 90 degree. The next angle is reflex angle. An angle whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree is known as reflex angle. Look at this example. Here is show green line, that is a straight line which is 180 degree, right? And see the blue line, that is complete the angle 210 degree which is more than 180 degree and less than 360 degree. Is it clear, students? So reflex angle वो होते हैं जो 180 डिग्री से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं. Look at this example. Here is given stairs and stairs का जो लोअर पार्ट है वो आप देखिए रेड लाइन में शो हो रहा है. वो कौन सा एंगल मेक कर रहा है? रिफ्लेक्स एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री. सी द स्ट्रेट लाइन ऑफ 180 डिग्री. इज इट क्लियर? ये कौन सा एंगल बना रहा है? रिफ्लेक्स एंगल. नाउ द नेक्स्ट एंगल इज कंप्लीट एंगल. एन एंगल whose measure is 360 degree is known as complete angle. कंप्लीट एंगल, कंप्लीट के नाम से ही हमें समझ में आ जाता है होल सर्कल. जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, मेक अ 360 डिग्री एंगल, 180 डिग्री अपर पार्ट से एंड 180 डिग्री डाउन पार्ट से. इज इट क्लियर? So that is a complete angle, and in this circle show all the angles: acute, right, obtuse, complete and reflex. Thank you.